Yes, good morning everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your history teacher. And now we are going to continue the same chapter, Europe. One question we have done day before yesterday. I hope you have completed your notebooks. And now we are going further. Palvinder, unmute yourself, beta. Yes. Ma'am, my video is on, ma'am, due to network connection. Ma'am, my Okay. video is not Okay. coming. Okay, beta. Okay. No problem, beta. Hanji, open your book. Page number. आदर्श, unmute yourself. बेटा पढ़ना शुरू करो. Start reading. साथ साथ में मैं समझा दूंगी, ठीक है? So that topic must be clear to you. हाँ जी, पेज नंबर. आदर्श पेज नंबर बेटा 13. हम पता है. 13 मुझे पहले ही पता था बेटा, पता नहीं क्योंकि क्लासेस मिस करते हैं हम. The age of revolution. 13 पेज नंबर 13. As conservation regimes try to concentrate their power. आदर्श चाय वाय नहीं पी है तूने आज? हैं? कैसे पढ़ रहा है? मम्मा ने चाय दूध कुछ नहीं दिया. हाँ, ठीक से एक्टिव होके पढ़. द एज ऑफ रेवोल्यूशन, 18 साल पढ़ने वाले हम लोग रेवोल्यूशन के. 1830 टू 1848. अभी 2 दिन तक हमने भी पैनिक में रहना है. पूरे यूरोप में रेवोल्यूशंस हो रही हैं, तो लिटिल वी हैव टू बी एक्टिव. 1830 टू 1848. ऐसे रो के नहीं पढ़ेंगे, ठीक है आदर्श? कभी कभी तो आना आता है. मैं बाद में पढ़ता हूँ. हैं? बाद में पढ़ता हूँ. चल ठीक है, पहले किसी और से पढ़ा लो. ठीक है, ठीक है, बट यही बैठा रही. हाँ जी प्रांचल पढ़ो बेटा. द एज ऑफ रेवोल्यूशन. अभिषेक तू कैमरा से ना पीछे हो जा बस. हाँ, सीधा होके बैठ जा बस. हाँ जी प्रांचल स्टार्ट बेटा. Ma'am, I do not have book. I will take today. बेटा कॉल मी आफ्टर दिस क्लास. मम्मा से बात करा. अभी तक तेरे पास बुक नहीं है तो पेपर 25 को पेपर है. बलराज अनम्यूट योरसेल्फ. स्टार्ट बेटा. बुक है मैम बुक है, लेकिन वो ना कमरे में पड़ी हुई, मुझे वीडियो ऑफ करनी पड़ेगी लाने के लिए. वीडियो ऑफ कर ले, मैं 1 मिनट के लिए वेट कर लेती हूँ. बुक ले आ. हाँ जी बलराज पढ़ना शुरू करो बेटा. द एज ऑफ रेवोल्यूशन. My mic is not working. द एज ऑफ रेवोल्यूशन. बलराज. मैं माइक नहीं चल रहा. हाँ जी पावनी अनम्यूट योरसेल्फ. Can I read? हाँ Can I read? हाँ जी प्लीज बेटा. As conservative regimes try to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland, and Poland. चलो वेट बेटा. थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस लाइन. एज कंजर्वेटिव रिजीम ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर. अब उधर से लिबरलिज्म और इधर से कंजर्वेटिव सारे लगे हुए थे अपनी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए. लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन इन मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप. कहाँ? इटली, जर्मनी में और ऑटोमन एम्पायर में, आयरलैंड में, पोलैंड में. इन चारों स्टेट्स में. अभिषेक प्लीज सिट प्रॉपर्ली. ठीक से बैठ जा बस अब. ठीक है, तो नाउ इन दीज 4 एरियाज लिबरल नेशनलिज्म आ रहा था. ओके, कंजर्वेटिव अपना काम कर रहे थे, लिबरल नेशनलिस्ट अपना काम कर रहे थे. हाँ जी बेटा, ऑल दीज 4 स्टूडेंट्स वीडियो ऑन, अदरवाइज दिस इज लास्ट वार्निंग, अदरवाइज आई विल रिमूव यू. हाँ, इफ यू वांट टू एंजॉय द लेसन वीडियो मस्ट बी ऑन, नहीं तो फिर यू नो मी. मुझे 4 बच्चे भी बहुत है क्लास में इंस्टेड ऑफ 25, बट वीडियो मस्ट बी ऑन. हाँ जी कंटिन्यू बेटा. पावनी. These revolutions were led by the
nationalists belonging to the educated middle class elite, among who were professors, school teachers, clerks, and members of the commercial middle classes. हाँ, ये तो मेरे बच्चों को पहले ही पता है। रेवोल्यूशन कौन लाता है? हमेशा पढ़े लिखे लोग लाते हैं, एजुकेटेड पीपल लाते हैं। और पावनी ने ये पढ़ दिया। एग्जाम्पल में भी टीचर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, क्लर्क एंड मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास। दोज हू वर कमर्शियल मिडिल क्लास मींस, आप लिख लो वहां पर बेटा, कमर्शियल मिडिल क्लास मींस बिजनेसमैन। ये पढ़े लिखे लोग ही रेवोल्यूशन ला रहे थे। हर्ष परमार, कैमरा ठीक करो, अभी भी ठीक नहीं है। हाँ जी, पढ़ो पावनी आगे बेटा। द फर्स्ट The first upwell took place in France in July 1830. The Bourbon kings who had been used to power during the Conservative reaction after 1815 were now overthrown by the liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. यस, अब क्या हुआ? फर्स्ट अपहीवल हुआ 1830 में, ठीक है, फ्रांस में। इसके बाद क्या हुआ? द बर्बन डायनेस्टी हु हैड रिस्टोर्ड द पावर ड्यूरिंग कंजर्वेटिव। बर्बन डायनेस्टी नेपोलियन के टाइम में इसके पास पावर नहीं थी, लेकिन जब कंजर्वेटिव आए, वियना कांग्रेस आई, याद है आपको वियना कांग्रेस? याद, पीछे वाले पेज पे आओ, पावनी ने जो पढ़ा मैं रिमाइंड करवाती हूँ। लास्ट पेज नंबर 11, थर्ड लाइन, द बर्बन डायनेस्टी व्हिच हैड डिपोज्ड फ्रेंच रूल रिस्टोर्ड पावर। अब यहां पर पावनी ने क्या पढ़ा? फिर पढ़ दिया, इसी पेज पे आओ। द बर्बन डायनेस्टी हु रिस्टोर्ड द पावर ड्यूरिंग कंजर्वेटिव वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल नेशनलिज्म। अब वो कंजर्वेटिव जिनकी पावर खत्म कर दी गई थी नेपोलियन के टाइम में, वियना कांग्रेस के टाइम में उनको पावर फिर मिल गई। बट एट द टाइम ऑफ 1813 बर्बन डायनेस्टी फिर से चला गया और उनकी पावर फिर से चली गई, बिकॉज अभी लिबरल नेशनलिस्ट का पलड़ा ज्यादा भारी है, ठीक है। तो अब लुई फिलिप उसका हेड था। चलो, नाउ समर, स्टार्ट रीडिंग बेटा, जहां से पावनी ने छोड़ा। The first upheaval took place in France in July. अच्छा, जहां से पावनी ने छोड़ा। अब ये मत कहना मैडम इंटरनेट इश्यू था, मैडम वॉइस क्रैक हो रही थी, मैडम सुना नहीं। When France sneezes, यहाँ से पढ़ो। When France is matches, one remark, the rest of Europe catches cold. The July Revolution sparked an uprising in Brussels, which led to Belgian break away from the United Kingdom of the Netherlands. ये कुछ लाइन सुनी सुनी लग रही है जो समर ने पढ़ी। When France sneezes, the rest of Europe catches cold. भंवर अनम्यूट करी। हर्ष परमार, कैमरा ठीक करो। ये लाइन क्या है भंवर जो समर ने पढ़ी? ऐसे कैसे नहीं? अच्छा, हर्ष परमार मैं रिमूव कर दूं बेटा? आप कर लो जो करना पहले। रंजोत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? When France sneezes? Madam, I don't know. An email. चलो, बहुत अच्छी बात है ना? फिर हम इतने ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं। बबल, अनम्यूट योरसेल्फ। When France sneezes? मिस लाइन का मतलब? ये लाइन में पहले बहुत बार कह चुकी हूँ। चलो, क्रिश ठाकुर, अनम्यूट योरसेल्फ। Not audible. Not audible. Ranjot, unmute yourself. मैम, इस लाइन का मतलब है जब भी फ्रांस कोई गलत काम करता है तो बाकी कंट्रीज को भी इससे अफेक्ट होता है। हाँ, यस। अब आपकी क्लास में 25 पीपल हैं। कहते हैं कि जब एक बच्चे को छींक आती है ना, पूरी क्लास को कोल्ड हो जाता है।
When France sneezes, the rest of Europe catches cold. फ्रांस को छींक भी आती थी ना, तो पूरे यूरोप को जुकाम होता था. It means whatever any kind of incident took place in France, सारे पंगे फ्रांस से पड़ते थे. सब कुछ पहले फ्रांस में होता था, उसके बाद बाकी कंट्रीज में होता था. सोचो 1789 में रेवोल्यूशन आई फ्रांस में. फ्रेंच रेवोल्यूशन ग्रेड 9 में पढ़ा आपने, 1789. And they want democracy, they want constitution, they wanted parliament. हमें तब पता भी नहीं था, पूरी दुनिया को पता भी नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. हमने कब बनाया अपना कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया ने. अभिषेक, when our constitution was implemented? 1950 में. और इन लोगों ने 1789 में बना लिया था, हमसे 200 साल पहले ऑलमोस्ट. सी, तो फ्रांस में जो कुछ भी होता था ना, सारे यूरोप में वही कुछ होने लगता था. This question I will tell you answer for this question today and you will write in copy. When France sneezes, the rest of Europe catches cold. Okay, it means whatever the things are happening in France, the same kind of things happened in full Europe. ध्यान देना. और ये बात किसने कही थी? मेटरनिक ने. Right. July revolution sparked an uprising in Brussels which led the Belgium breaking away from the. आप जहाँ पर लिखा ना ब्रुसेल्स बेल्जियम, वहां पर खुद लिखो Brussels is the capital of Belgium. प्रांजल लिख ले Brussels capital of Belgium. अच्छा, अब ये याद रखना, when we will do first chapter of civics power sharing, I will ask this question and this will be the first question to be asked. तब देखूंगी मैं किस किस को याद है कि बेल्जियम की कैपिटल क्या. याद रखना, ठीक है. चलो, now open your copies. आज यहीं तक पढ़ेंगे. Write down today's date and question. यही वाला लिखो. When France sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold, signifies or identify the statement. मैं भी बोर्ड पे लिखती हूँ, मेरे साथ लिखो आप. Very very important question and these questions are kind of a HOTS question, HOTS, higher order thinking skill. जो क्वेश्चन सबको नहीं आते हैं and you will not get direct answer from textbook. ये मैं आपको लिखवाऊंगी, डिक्टेट करवाऊंगी. 3 marks आंसर. Write down today's date, 19 April. बेटा वीडियो ऑन. हर्ष परमार, गुरप्रीत, कृष. Yes. When France sneezes, the rest of Europe catches cold. When France sneezes, the rest of Europe catches cold. गुरप्रीत रिमूव कर दूं आपको? प्रभप्रीत, अभिषेक, क्वेश्चन तो बुक से भी नहीं मिलेगा जो मैं लिखवाने लगी हूँ. Will not get direct answer from book. Explain the statement. हर्ष परमार, कैमरा ठीक नहीं है. सी, कितनी बार मैंने कह दिया. हर्ष परमार, मैं रिमूव कर दूंगी, फिर बोलोगे मैडम ने क्वेश्चन नहीं करने दिया. अभिषेक भावर, कैमरा ऑन. हर्ष परमार, मेरा कैमरा ऐसे हो ठीक लगेगा? देखिए जरा, ऐसे ठीक लग रहा है मेरा कैमरा? अच्छा लग रहा है? तू ऐसे बैठा छत की तरफ कैमरा करके. तेरी क्लास के बाकी स्टूडेंट्स देख कैसे बिल्कुल सीधे होके बैठे हैं. सी, एक अभिषेक को टिक के बैठना नहीं आ रहा. नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट एडमिट इन द क्लास दीस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. हाँ जी, क्वेश्चन है, राइट डाउन टुडेस डेट. When France sneezes, the rest of Europe catches cold. Explain the statement. Write down today's date. And question is, मैं भी लिख रही हूँ, ध्यान से प्रॉपर लिखना. बस आज पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ यही क्वेश्चन लिखेंगे. Today's date is
And question, explain the statement. अगर आपने पहले स्टेटमेंट लिख लिया है तभी भी कोई बात नहीं, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट when France sneezes, sneeze होता है छींकना, है ना। When France sneezes, the rest of Europe catches cold. Camera on, Gurpreet, Adarsh. Okay, answer. रंजन लिख रहे हो? हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट। These are the remarks of Metternich. These were the remarks of Duke Metternich, who was a conservative. Harsh Parmar, make your camera proper. Harsh Parmar. These were the remarks of Duke Metternich, who was a conservative. Who was a conservative? He was the chancellor of वियना कांग्रेस। हाँ समर, हाँ बेटा, मैम ये फर्स्ट पॉइंट है, ये इंट्रोडक्शन है। Who was the vice chancellor of Vienna Congress? Now first point. And the first point. हाँ अभिषेक, हाँ बेटा। मैम मुझे ना थोड़ा दिख नहीं रहा मैम, आप साथ साथ में प्रोनाउंस करते जाओ प्लीज। ठीक है बेटा, ठीक है, डेफिनेटली बेटा। These were the remarks of Duke Metternich, who was a conservative. He was chancellor of Vienna Congress 1815. हाँ जी, first point. Ideas of liberty. Underline. Ideas of liberty. हाँ रंजोत, मैम वियना के बाद क्या लिखा है? किसके बाद? वियना के बाद 1815, 1815. The ideas of liberty and democratic rights. The ideas of liberty and democratic rights
but the most important legacy रंजोत लिखो बेटा पहले। लेगेसी होता है देन, क्या दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, of the French Revolution 1789. Of the French Revolution 1789. Harsh, camera proper. Bhavan, camera on. Most important legacy of French Revolution 1789. The Revolution of 1789. इसके बाद डिक्टेट कर रही हूँ, बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ बेटा। आफ्टर दिस आई एम डिक्टेटिंग, नॉट राइटिंग ऑन बोर्ड। इसके साथ ही एक लाइन बोली मैंने। The Revolution of 1789 The Revolution of 1789 had a far-reaching, बहुत दूर तक पहुंचने वाले, had a far-reaching, समझते हो, बहुत दूर तक पहुंचने वाले, far-reaching impact, जिसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक पड़ा। हाँ समझ? मैम आप शुरू से बता दो फिर से। फर्स्ट पॉइंट मैम नहीं मैम, जो आपने बोला अभी। अच्छा ठीक है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 had a far-reaching impact on the whole world. Far-reaching impact on the whole world. प्रांजल, yawning? चाय चुए नहीं पी, दूध नहीं पिया है ना? हाँ जी, सेकंड पॉइंट, एज ऑफ रेवोल्यूशंस हेडिंग है जो आज हमने पढ़ा ना, एज ऑफ रेवोल्यूशंस। एज ऑफ रेवोल्यूशंस ब्रैकेट में लिख लो 1830 to 1848। अंडरलाइन। हाँ भवन, हाँ बेटा। मैम डेट दोबारा से बोलना। मैं रिपीट कर देती हूँ हेडिंग। द पीरियड ऑफ, सॉरी, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस ब्रैकेट में लिख लो 1830 to 1848। अंडरलाइन। हर्ष तुझे कैमरा नहीं ठीक करना आ रहा। द पीरियड फ्रॉम 1830 to 48, the period from 1830 to 1848 1830 to 1848 is known as the age of revolutions. अभिजीत थक गए?
एक ही पॉइंट लिखा अभिजीत अभी। इज नॉन एज द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। And even in the case of अभिषेक लिख रहे हो? Okay. And even in the case of first upheaval, जो आपने बुक पे भी अंडरलाइन किया था, 1 मार्क आंसर। फर्स्ट अपहीवल होता है रिवोल्ट, रिबेल। द फर्स्ट अपहीवल took place in France, in July 1830. Took place in France in July 1830. हाँ बेटा समर। Ma'am, can you repeat from first term? Yes. From first point or second point? Ma'am, first term. ये टर्म थोड़ी है। मैम आपने भी बताया नहीं था पॉइंट। हाँ उसमें मैम आपने बोलना फर्स्ट टर्म। नहीं, फर्स्ट टर्म नहीं, फर्स्ट अपहीवल। मैम क्या? अपहीवल, UPHEAVEL। ये लाइन अभी आपने बुक पे भी अंडरलाइन करी है। अभिषेक सिट प्रॉपर्ली। अभिषेक, फर्स्ट अपहीवल took place in France in July 1830. Last point, third point. July Revolution. Third point. July Revolution. Underline. The July Revolution in France स्पार्कलिंग होती है ना, चिंगारी, स्पार्कलिंग, स्पार्क्ड, SPARKED, स्पार्क्ड एंड अपराइजिंग भी रिवोल्ट होता है। एंड अपराइजिंग मैं जिनके कैमरे ऑफ है रिमूव कर रही हूँ बेटा, गुड बाय। An uprising in Brussels. अमृतपाल, ब्रुसेल किसकी कैपिटल थी? अमृतपाल, गुड मॉर्निंग मैम। ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल थी? अभी किया था आपने अंडरलाइन। मैम जुलाई रेवोल्यूशनरी। अरे ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल? मैम बेल्जियम। हाँ बेल्जियम, वेरी गुड, बेल्जियम की कैपिटल थी। ठीक है, हाँ जी। मैंने क्या बोला? द जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स and even in other parts of Europe. And even in other parts of Europe. And even in other parts of Europe. This much only. Question finished.
Thank you, Abhijit. Thank you, Babal, for quick reply. Thank you, Krish, Jaspreet, Samar, Gurtej, Abhishek, waiting for Pavni. Thank you, Iknoor. Thank you, Bhavar, Palvinder. Thank you, Adarsh, Pavni, Prabhpreet. हाँ जी, डन बेटा। Done, beta. Now, Iknoor, unmute yourself. Yes, ma'am. Iknoor, after writing this question, what we will do? Fill index. Tell me how to fill. First, we will write serial number, date, and then we will write the name of the chapter. And then we will write the age of revolution. हाँ, वैसे हम ये सब कुछ नहीं, टाइटल बाकी तेरा ठीक है, टाइटल इतना बड़ा नहीं लिखेंगे. नो नीड टू राइट अगेन द नेम ऑफ द चैप्टर. यूरोप 20 दिन से वही तो चल रहा है, तो चैप्टर का नाम नहीं लिखेंगे. वी ऑलवेज राइट टाइटल, है ना. हम टाइटल ही लिखते हैं. आज इसका टाइटल क्या बनेगा? आज इसका टाइटल बनेगा एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. बस पीछे डॉट 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 डाल देना. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट डॉट डॉट डॉट. ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ खास है. दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी क्वेश्चन. ये कुछ खास क्वेश्चन है आज. ओके, दिस इज समथिंग स्पेशल क्वेश्चन. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल. दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी क्वेश्चन बेटा. Now show me your copies in camera. Today all of you please show me the date where you have written date. 19 April. कहाँ लिखी? Okay. Very good, Iknoor, Abhijit, Pavni, Krish, Jaspreet, Babal. Samarveer, Pavni, very good. Gurtej, copy दिखा. Krish, copy दिखा. ओके, वेरी गुड. अच्छा, आदर्श ने लिखा भी है हॉट्स ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल. गुड, ठीक है. अभिषेक, वेरी गुड. नाउ शो मी थर्ड पॉइंट. जहां हमने थर्ड पॉइंट लिखा था, लास्ट पॉइंट. शो मी द हेडिंग. ओके, वेरी गुड. क्रिश, अभिजीत, इकनूर, समर, बबल, जसप्रीत, गुरतेज. पावनी, कॉपी दिखा. अमृतपाल, कॉपी नहीं देखी मैंने तेरी. भवर, आदर्श, प्रभवीत, शो मी योर नोटबुक्स. ओके पावनी, गुड गर्ल. चलो, थैंक यू वेरी मच. नाउ आई एम गोइंग टू एंड अप द क्लास. यू प्लीज कंप्लीट योर क्वेश्चन एंड इंडेक्स आल्सो and your homework. Revise this question and learn all the topic till page number 12 which we have done. Thank you beta. Thank you very much. God bless you. Okay, bye bye.